running. Cause I took a L and I swear that I lost it. Bitch kid rocks, little hoe, you toxic. Can't fold, I ain't got no options. Big rats gon' fill in my pockets. Left me like, where did you go? Did things that I never know. You best go leave me alone. Shawty, I know you gon' hate me. I'm finna whip a Mercedes. Bet I be driving you crazy. Got this shit out of the gutter. Did it for me and my brothers. Loving the way that you hate me. Baby, it's feeling amazing. I'm feeling amazing. Shawty, I know you gon' hate me. I'm finna whip a Mercedes. Bet I be driving you crazy. Got this shit out of the gutter. Did it for me and my brothers. Loving the way that you hate me. Baby, it's feeling amazing. I'm feeling amazing. But I got pain. I got pain, 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 pain. So you gon' pay. Look at the way you done made me. Telling me stay, 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 stay. Bitch, stay away. Or you gon' pay, bitch, you gon' pay me. How about a whip, no talking? I know you always want something. Try to flee on me, you bugging. Back then we ain't had nothing, but I told everybody it's coming. Now the 604 be jumping, and it's fuck you, bitch, for running. Cause I took a L and I swear that I lost it. Bitch kid rocks, little hoe, you toxic. Can't fold, I ain't got no options. Big rats gon' fill in my pockets. Left me like, where did you go? Did things that I never know. You best go leave me alone. Shawty, I know you gon' hate me. I'm finna whip a Mercedes. Bet I be driving you crazy. Got this shit out of the gutter. Did it for me and my brothers. Loving the way that you hate me. Baby, it's feeling amazing. I'm feeling amazing. But I got pain. I got pain, 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 pain. So you gon' pay. Look at the way you done made me. Telling me stay, 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 stay. Bitch, stay away. Or you gon' pay, bitch, you gon' pay me. Shawty, I know you gon' hate me. I'm finna whip a Mercedes. Bet I be driving you crazy. Got this shit out of the gutter. Did it for me and my brothers. Loving the way that you hate me. Baby, it's feeling amazing. I'm feeling amazing. But I got pain. I got pain, 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 pain. So you gon' pay. Look at the way you done made me. Telling me stay, 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 stay. Bitch, stay away. Or you gon' pay, bitch, you gon' pay me. How about a whip, no talking? I know you always want something. Try to flee on me, you bugging. Back then we ain't had nothing, but I told everybody it's coming. Now the 604 be jumping, and it's fuck you, bitch, for running. Cause I took a L and I swear that I lost it. Bitch kid rocks, little hoe, you toxic. Can't fold, I ain't got no options. Big rats gon' fill in my pockets. Left me like, where did you go? Did things that I never know. You best go leave me alone. Shawty, I know you gon' hate me. I'm finna whip a Mercedes. Hello guys, welcome back to another live stream. क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे. क्या मार रहा है भाई वो? बाय.
Mage killed. 10 kills remaining. Good. The eyes are down. Goodbye. 5 kills remaining. Nature girl down. Got 3. How? 1 kill remaining. Dominating. रुका भी नहीं भाई कहीं से। Auf Wiedersehen. Strong results. Let's run it again. और बता भाई लोग क्या हाल चाल है? सबके बढ़िया हाल। बढ़िया बढ़िया। क्या सब लोग बढ़िया है? What's this? What's this? What's this? यो। हेलो हेलो। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। एक अनरेटेड कोई और है बताना आ रहा है कोई? गाइस किसी को खेलना हो तो फटाफट से आ जाओ। वो तो विशेष का अबे वॉच पार्टी रखना क्या बोलता है? रख सकता है वीसीटी की वॉच पार्टी। यस। भाई लेकिन यार इंटर ही चल रहा है अभी तो मतलब खास कुछ है नहीं। अभी हाँ अभी देख रहा था मैं मैच में देख तो रहा था बट वही है ज्यादा कुछ है। स्पाइडर भाई अभी लेकिन अपना अरे साथ में वीसीटी लगा के रखते हैं भाई देखेंगे हम वीसीटी भी। वैसे अबे लेकिन प्रॉब्लम है सर वो तो कुछ कर नहीं रहे ना अभी। अरे अब मेरा पी- चलता पीछे रहेगा भी भाई प्लेयर सेकंडरी पीसी में चलता रहेगा। पीछे पीछे प्लेयर्स सेटअप हो रहे हैं अभी देखो।
वही लगा रहा हूँ, वही लगा रहा हूँ, बस मैच लगा रहा हूँ। बस बकचोदी कर रहा अबे हूँ। लॉग इन करने को क्या कह रहा है, पागल हो गया क्या ये? I am burning this thing. ट्विच का तो लोग ही नहीं मानता है। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। लॉग्ड इन पड़ा था भाई पहले से। जैन एक लॉक इन ड्राइव दिला दे, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा अगले महीने। मेरे पे बहुत है जैसे। हाँ तेरे पास भाई तो अमीर बाप की औलाद है ब्रो, इतना बढ़िया बढ़िया सेटअप है। हाँ एक आध सेटअप बेच। अच्छा। Match found. अब तो बोलेगा सेटअप का क्या ही फायदा, स्किन का क्या ही फायदा जब सेटअप ही नहीं होगा। 5500 का है भाई लॉकिंग नाइफ। 5500 का है। अबे पढ़ ला वेट गया करो, वेट क्या? करो, पिक मत करना, पिक मत करना। अबे ये देख, बोल रहा हूँ देख। पिक मत करना। देख इसे, सॉरी सब एक एजेंट ले लो और पिक मत करो। अबे सभी एक एजेंट, रैंडम एजेंट, रैंडम 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 रैंडम। सब एक ले लो, बस जेट पकड़ लो, सब जेट रख लो। लॉक मत करना, लॉक मत करना। लॉक मत करना, कानिज। रेंज रेंज। ओ क्रिंज। हाँ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, अबे नहीं कर रहा। अबे तो जेट तो पकड़। जेट रख। हाँ बस। पहले बताना था कि कोई नहीं है। लास्ट मैंने ट्विच पे लाइव करा था 26 जनवरी को गाइस, अब मैं आज कर रहा हूँ। ए जैन तो ट्विच पे मेरी भी खोल दे, मेरा एफिलिएट करवा दे उधर, इससे अच्छा। अभी खोल ही वहाँ रहा पे है। कैसे एफिलिएट होता है? हाँ, उधर 3 एवरेज व्यूइंग चाहिए होती बस। बस बस वही बहुत मुश्किल है लेकिन। क्यों? धुएं निकलवा देती है अगर तुम्हारी पहले ऑडियंस नहीं है, नया नया स्टार्ट कर रहा तुम ट्विच पे, धुएं कट निकलवा देती है वो। अगर मैं बोल दूं 3 बंदे मेरे को देखते रहो, बस चलता रहेगा। 3 बंदे देखो, 7 दिन कांस्टेंट के लिए पूरी स्ट्रीम लगातार। कांस्टेंट 3 की बची मुंची है। यस एग्जैक्टली, उससे ऊपर वही तो है। मेरे पे 3 फोन है, मैं 3 फोन से कर दूं फिर हो जाएगा काम, फिर तो सही। लेकिन अलग अलग वो चाहिए ना अकाउंट्स प्लस अलग हाँ वो सब है। हाँ तो अलग अलग डिवाइसेस भी होंगे ना। हाँ अलग अलग डिवाइसेस भी, अलग अलग आईपी भी, अलग अलग अकाउंट्स कर भी, दूं तो कर दूं क्या कर से दूं पिच में। आइडेंटिफाई। ओह हाउ इट विल आइडेंटिफाई दैट इज द सेम पर्सन, है ना। लेकिन चैट भी करते रहना चाहिए। हाँ वो भी करते रहेंगे, बैठा दूंगा घर वालों को, करते रहो भाई। 7 दिन घर तुम्हारे वालों को बॉट ही लगा देंगे ना। अबे बॉट यार, फिर बॉट सही नहीं है, कम से कम घर वाले देखेंगे तो। दोस्तों को बोल दूंगा, दोस्त तो देखेंगे। भाई मैं चैम्बर हूँ, मैं चैम्बर हूँ। करेंगे ब्रो। भाई वो Nah, there's only one window and she's ours. That's a fake. तारों का वेलो कार्ड। देखो पता है ये सिंपिंग करता फिनिक्स पूरी। हाँ और क्या, जेट पे भाई, जेट को पसंद है। जेट और फिनिक्स के साथ चल रहा है ना लफड़ा। I'm out of here. हैं? ए जैन तूने आज की मेरी वीडियो देखी? नहीं यार, ए जैन देखना आज की इतनी बढ़िया डाली है, तू देखता नहीं। ठीक है भाई, ठीक है भाई। सर आई वाज बिजी। तो दे अभी देख लेना। I'm out of here. अभी देखेंगे। अभी देख खोल के देख। अभी मैं तेरे को प्रोटेक्शन देता, तू इधर खड़, मैं तेरे को प्रोटेक्शन देता, तू देख वीडियो। Go, go, तो go. कुछ नहीं बोलेगा। इनिशिएटर नहीं है कोई। नहीं फिर क्या होगा? अबे बी होगा। चल अबे शिफ्ट कर ले। वैसे तो भाग के आ गया, अब क्या शिफ्ट हो फायदा वैसे देखा जाए। Reloading. Someone's B. Reloading. Spike down B. 150 अबे क्या है यार ये, क्या डैमेज है ये? फालतू का डैमेज लग रहा है भाई, गोश्त बेकार हो गई आजकल। मेरे को सैरिफ ज़्यादा जम रही है भाई, अब गोश्त नहीं जमती बहुत दिनों से। मेरे को सैरिफ जमने लग गई है, मेरे को गोश्त जम ही नहीं रही है। B. ऊपर है मलबा भाई। अबे आज एक बच्चे Last player standing. -50 अबे कैसे हाउ? विफिनॉल विफलॉट। अरे मेरी बात सुन। हाँ बर्थडे की प्रेजेंटेशन थी, उसका टॉपिक था क्या हाँ जिसकी वो थी प्रेजेंटेशन थी। क्लासमेट की उसकी वो थी, और उसने लिखा था सिद्धू मूसेवाला फेवरेट हुआ ठीक है। तो उसने जब वो एजुकेशन पे गया ना, तो उसने मेरे वाले शहर से ही किया ना, सिद्धू मूसेवाला जाने से ही, नानक देव कॉलेज है। तो
तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी उसने, तो मैंने कहा है सिद्धू मूसे वाला है, दो तारे जोते जोते मैं भगवान को प्यारा हूँ। मस्त भाई। दो एक बांधा भाई, नियॉन डिफ कर दिया भाई मैंने मुंह पे भाई, चांटा मारा भाई। Player अबे standing. यार नियॉन डिफ, नियॉन डिफ तो है, तारे जोड़ते जोड़ते भगवान को प्यारा हो गया। नियॉन डिफ तो है। तो सोर्स कॉलेज उसका Spike planted. मेरा बस ओ भाई चलो आ गया वापस, आ गया वापस। आ गया लो भाई फैंटम दो। तूने बात नहीं सुनी है। क्या सुन तो रहा था भाई। अरे बालवा ने सुनी, और अगर सुना होता तो हंसी आती। तो क्या था ना सोर्स कॉलेज, उससे पहले जो मेन बात थी वो तो नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी थी उसने। हाँ, उसके बाद वाली भी बात नहीं सुनी। लुधियाना से की थी। सिद्धू मुझसे वाले, अबे चुप चुप मैं सिद्धू मुझसे वाले ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था ना। हाँ हैं? हाँ उसने कहा सिद्धू मुझसे वाला दो तारे जोते जोते भगवान को प्यारा हो गया। दोस्त है कॉलेज। हाँ मेरे फ्लैश के बाद ही पिकेगा, मेरे फ्लैश के बाद ही उसको अंधा थोड़ी होना है। स्टन है भाई वो। अरे वो फ्लैश के एग्जैक्ट फ्लैश के बाद ही पिक करेगा बंदा। ये लीवो का अकाउंट पे खेल रहा है क्या? नहीं और? लीवो का तो अकाउंट और अबे ऊपर 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 काने के ऊपर काने Spike अबे लेफ्ट planted. साइड ऊपर इधर भाई क्या बंदा है भाई, क्रिंजी है लिटरली। Last player standing. Flawless. भाई ये तो अलग ही है भाई, क्रिंजी तेरे सामने था इधर बंदा टॉप पे। Please stay wall alive. ऊपर था। I hate making new friends. Go, go, go! भाई चेंबर अरे तो चेंबर का जब बंदा सामने तो मारेगा नहीं भाई। एजेंट छोड़, ये चाहिए स्किन चाहिए भाई, चाहिए मेरे को दे दे सेक्टर की। देता रुक जा, इसको मार्शल के दे, मार्शल ये भाई दे चल। मैं ना वो माइक्रोसॉफ्ट एज वाला था से लेके कार्ड तो। अरे वो रिवॉर्ड वाला भाई मेरे को समझ साले आए नहीं इस बार यहाँ। ए Spike down. अरे आगे भाई। रिवॉर्ड्स वाला ट्राई किया नहीं जेट कहां है जेट? भाई को भाई मैं बेंच कभी यूज नहीं करूंगा भाई, इतना भाई याद है ना। मर गया क्या? हां जब तक नहीं मरा भाई। अरे Go, go, go! My ult's ready. Out of charges. आया आया। Watch out! I'm out of here. Out of charges. One enemy remaining. अबे कुछ तो दे मेरे को। 5 लेके एक है क्या? Gotta go. पैक तो हमारे पास ही है, तो क्या ही करना है। क्या मस्त एजेंट है बे, मूवमेंट वाला मस्त एजेंट है भाई। अबे उधर कहाँ से पहुँचा? पूरा ट्रायड कर रहा है। Out of charges. फुल ट्रायड गाइस, फुल ट्रायड तो है। I'm out of here. यस फुल यार ए छोड़ बस। आ जाओ सुप्रीत मिशन। दन दिलाई Weapon here. Gotta go. हां मैंने स्किन के लिए दी Gotta go. अरे तूने नहीं दी, अबे तूने दी ही नहीं। I'm out. भाई दे तूने नहीं दी, तूने नहीं दी। I'm out of here. मुझे लगा मैं दे दी। Watch your eyes. क्या फ्लैश था भाई ये? अरे हमको नहीं फ्लैश करेगा, उनको फ्लैश करेगा, ऐसा वाला फ्लैश था। My ultimate's ready. भाई इस बार यहाँ पे नहीं आए ये लोग, ये आ गए हैं लगता। Go, go, go. ऑब्वियसली भाई इतनी बड़ी पिट मैं के लैग ये कर भी रहा हूँ जाएंगे। चल बे डब्ल्यू दबा। मेरा भी अचानक ये प्लांट होगा। वाइपर आ चुका। 80 Spike planted. पता नहीं लगा नहीं। आरएनजी Take out of charges. हील करना हील। हेल का Welcome to my world. Gotta go. हील करना Last player क्या भाई? standing. ब्रो यार पीछे भी कर देखना, पीछे देना, आगे थोड़ी ना देना। हां तो Go, go, go. उसने आगे भाई हील कर दिया।
भाई ये तो मुंह पे बैठा हुआ है। मैंने वो हील वाला और निकाला भाई, वो आगे सामने। ये क्या बदतमीजी है। Together, we will bury under their transgressions. क्या होगा? अच्छा मेरा अल्ट है ना। दियो स्पाइडी, ऑफ दियो स्पाइडी। स्पाइडी ऑफ दे। ट्रैक्टर देना होगा। ऑफ कहां से दूं? आयन ऑफ नहीं है तेरे मेरे पास? पास ऑफ की स्किन थोड़ी है। नहीं तो आयन किन आयन नहीं है तेरे पास? नहीं मेरे पास नहीं थी, किसी और के पास होगी। I'm out of here. आज खेल रहे थे, किसके साथ खेल रहे थे उसके पास अरे थी। नहीं तेरे जैसा कोई नमूना था जिससे पैसे लेके अच्छा मैं नमूना अबे दोस्तों से पैसे लेके नहीं थे। Out of charges. अबे आज का इसको स्ट्रीम पे आ क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया तुम लोग को? आज आ क्यों नहीं रहे? I'm out मैं of here. पता नहीं भाई कहाँ होगा चलेगा भाई लोग बाग। भाई मालवा भाई स्ट्रीम ब्रो क्या लैग है यार, मैं नहीं खेल रहा। क्या होगा? पे वाइपर 100 HP शील्ड नहीं है। ऊपर ना। Shocking. तो मेरा अल्ट बर्बाद कराओगे क्या? रोटेट कर सकते हैं, बोला था स्पॉन है। Almost out. रोटेट कर दी। रिकॉर्ड नहीं है। You will not kill my allies. ये कहाँ था? पीछे से ही मार सकते। देखो भाई सामने से नहीं मार सकते, इतना दम नहीं है किसी में कि मेरे को सामने से मार दे। इससे तो ये पता लगता है। गया फिनिक्स। अरे काटना था, काटा ही नहीं। इतना अरे यार इतनी आगे पहुंच गई थी कि मेरे को नहीं पता था। आगा अरे Spike down. Attack. अबे कार्नेज ये क्या कर रहा था? कार्नेज भाई ये क्या? मार देना भाई तुम लोग उसका वो कैसे मैंने उसको मारा उसके था। इतने सारे नाइफ खत्म हो गए, वो तब भी मर गया। कैसे? हाउ इज इट Remember, पॉसिबल? bullets hurt. तो जानने पिछली बार अल्टीमेट। अरे मैं लैग नहीं किया था तो मन नहीं मरता नहीं यार। छोड़ सब लाइक पे दोस्त दे दे। हाँ मेरा सही में लैग कर रहा है। Gotta go. आज के लिए मैं बी आएंगे मुझे लगता है इसमें। मैं मार शुरू किया। I'm out of here. क्या स्लाइड मारता था बर्बाद इधर ही है। अबे तू तो स्लाइड करता अबे मिड में पीछे जा नियन पीछे जा। नाइस। ये क्या था भाई? वन सवा कर दिया ऑपरेटर से उसके पास। One enemy remaining. Watch out. Take this. अबे क्या है ये? Last player. उसमें मार रहा है भाई, उसमें मार रहा है, देख रहा है? उसमें मार रहा है भाई ये स्टन में। क्रिंज अबे स्टन में मार रहा भाई ये, स्टन में मार रहा। मैं तो नाइफ करता। क्या है ये? ब्रो जब अपने कार्ड्स देखे होंगे कह रहे होंगे टीम है भाई, अच्छे प्लेयर होंगे। अब देख लो। Gotta go. ट्राई हार्ड करे क्या बोल। अबे ट्रायड कौन कर रहा है? मैं तो कर नहीं रहा। करना पड़ेगा। कर लेंगे भाई, अपने हो गया भाई उसने ओडिन उठा ली भाई। आ गया अपना क्रिंजी ने शुरू कर दी उसने। स्पैम करेगा भाई बेचारा उसके बाद बोला ही नहीं भाई, जब से उसको क्रिंज बोलना शुरू। Gotta go. ये वाह क्या फ्लैश है भाई, क्या वाओ। फिनिक्स मेरे को क्यों दोनों बार वाह। वेरी नाइस सुकुट, वेरी नाइस फ्लैशेस। इसका गेम है भाई। अबे स्पाइडर को देख लो भाई। स्पाइडर क्या भाई? किसी ने नहीं देखा। नहीं भाई कल रील आ रही है भाई इसकी तो। स्पाइडर भाई कल तो इसकी वो आ रही है भाई। 80 मैं तो इसका शॉट्स डालूंगा भाई। व्हेन यू गॉट अ बेस्ट टीममेट। अरे भाई क्या इसका तो वो आएगा। इसका तो शॉट्स आएगा भाई। क्या करूं, अब गया तो इसका शॉट्स आएगा। स्पाइडी तू अकेला नहीं है। अभी होगा। Go. क्या ही करेगा इतना पैसा बचा स्क्वायर क्या मौका मिला था। बाय कर लिया भाई।
पाजी बाय कर लिया पाजी हमने। उसको वेंडर देना। वेंडर लेना सुमित, वेंडर लेना। अरे वो प्रीमियम वाली वेंडर ले दो, ये वेंडर। प्रीमियम नहीं है, नेपट्टून प्रीमियम नहीं। अरे वो नहीं बे, अरे वो दूसरी नेपच्यून। वो कौन सी है प्रीमियम? ये भी प्रीमियम है, वो भी प्रीमियम है। से हील दे, मालवा हील। मालवा भाई हील देना था तुमको। अबे कोई तो प्रोटेक्शन नहीं। मालवा हील दो। नियॉन मैं 3 HP था भाई, मैं 3 HP था भाई। कौन सा तूने झंडे का लिए? जेट पार्टी में है। हाँ जेट पार्टी में है। हाँ है। असु भाई वेलकम टू स्ट्रीम, कैसे हो? बस ठीक है जान, मैं नहीं तेरे साथ मत रहे भाई, मैंने मना करा है। चुतिया पा कर बता रहा हूं। अबे भाई मेरे को मैं खुद 3 HP बचा था भाई, मैं मालवा से हील मांग रहा हूं भाई, मिल ही नहीं रहा। क्रिकेट भी तूने कौन सा कुछ उखाड़ लिया? पहले मर जाता। तेरा ट्रेड तो लिया एटलीस्ट। और तुझे पता है बड़ी लॉबी में लोग वेट करते लेकिन ट्रेड लेते हैं। ये छोटे गेम प्ले वाले बदतमीजी करना बंद कर दे। कुछ बड़ी लॉबी की तरफ बच सकता था, मैं नहीं बच सकता था अगर तू आज। अभी मैं पता है कितना दूर था, जब तू मरा तब आया हूँ मैं ए लिमिट लिंक पे। मैं इधर था, तू इधर था, बस ठीक है भाई ऐसे कर ले। ए अब और क्या रहा ओ भाई, अबे यार ये जाएंगे लोग, ये जाएंगे। ए ही है 17 ऑन और आदमी Spike planted. ये कॉपर है। नाइस। नाइस। This way. 40 दिया भाई, क्या यार। पीछे आया था। लेफ्ट वेरी बैड भाई। भाई क्या डांस कर रहा है उसके सामने। उसको गंदा चाटा मारा ना भाई। Enemy remaining. कॉपर है लास्ट। भाई नियॉन कोरोना 2 वाइड भाई उठा, सोवा को फेल दे भाई। अबे जा सोवा डिप कर दे। जा भाई हो चुका है। तू ही होगा। अब डिफ क्या करना है। अब क्या सेव कर ले। भाई फिर बोलता है चेंबर पहली बार खेल रहा हूं। क्रिंज। मैं चैम्बर पहली बार नहीं खेल रहा, तू ही पहली बार खेल रहा है। Go. अरे गेम में अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। स्पाइडर है जेट, हाँ स्पाइडर है मिक्रम भाई। यस ससु Out of here. क्या हुआ? हाँ स्पाइडर है, स्पाइडी स्पाइडी स्पाइडरमैन। इधर आ जिसके वेब Go. उसे पता है स्पाइडर। मेरे दिल का अच्छा है। Quick feet. नहीं quick bro। trick. I'm out of here. कॉपर रहेगा मेरे। कितना मजा आ रहा है भाई। This way. I'm out of here. क्या चक्कर है ये नहीं है क्या? नहीं ये नहीं है, बी आएंगे। भी ही है बी। बढ़िया तो नहीं दो Take this. Watch out. भाई 3 बंदे पिक ले रहे भाई एक साथ भाई, मेहनत करा भाई। अबे अल्ट भी रेडी क्यों हुआ अभी? Last player standing. अबे ये इधर कहां से आया? पिलर हल्का सा ऊपर ले। Sight. अब इसके ऊपर 3. हाँ अरे देख 21 गोली में रिलोड मार रहा है। अरे भाई क्यों कर रहा था रिलोड, क्यों कर रहा था? पता नहीं क्यों कर रहा। मैं आ भी जाता है भाई, Last गंदी player आदत। before the switch. गंदी आदत भाई, गंदी आदत। Go. सुखप्रीत अब देख क्या करता हूँ मैं। I'm out of here. Gotta go. चलो मैं भी आ रहा हूँ। Go. Go. I'm out of here. Watch this. Get out of my way. Here we go. Spike down mid. 3 लोग मिड थे भाई। लेफ्ट में लेफ्ट। One enemy remaining. बढ़िया। यहीं पे ऊपर बैठा था हरामी भाई। वाह क्या मूवमेंट है भाई, क्या मूवमेंट है, वाओ लवली मूवमेंट।
सुबह मॉली फेंक मॉली फेंक मॉली फेंक मॉली फेंक मॉली मॉली मॉली। Watch your eyes. अरे मॉली फेंक मेरी जान। Going up. क्या कर रहा है? दे रुक जा खेलने दे। मैं जा रहा हूँ मेरे को किल दे दो। नाइफ लियो। मारो मार दे। सेज का किल है, सेज चलता रहा, नाइफ होएगा मत अबे ट्राई हार्ड कर रहा भाई जेट तो। नाइफ खत्म नाइफ खत्म। नाइफ यार। अरे कौन सा नाइफ है भाई? भाई अरे वो उसकी हालत खराब हो रखी है, नाइफ कहाँ से करेगा भाई? बहुत जेट बहुत ट्राई हार्ड कर रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा वाला। मैं तो मजे ले रहा हूँ भाई पूरे नियॉन खेलने के। तो मैं भी मजे ले रहा हूँ यार, ट्राई हार्ड तो नहीं कर रहा। तुझे कोई कह रहा है क्या? मैं कर रहा हूँ, मेरे से हो नहीं रहा। मैं जेट नहीं हूँ भाई। अबे नहीं बे, सामने वाले जेट को कह रहा हूँ। वही इमोशनल टाइम। मैं तेरे मजे ले रहा हूँ। समय देखते हैं नाइफ पड़े तक। Go, go, go. तू अपना चेंबर टेकड़ा दिखा। उसके नाइफ छोड़। भाई चैम्बर वाले बहुत बकवास है, बहुत ही बकवास है। I'm out of here. टीला बोलना तेरे को सस्ता सिनेट्रा बनने का शौक है। मैं ब्लाइंड दे रहा ठीक है। Blocking sight. यार सीरियल के बाद भाई 3 डुएलिस्ट है हमारे पास। बस ये सिर्फ हील कर सकती है भाई। प्लांट कर ए पाला प्लांट कर। Too slow. अबे यार ये इधर भी था, मेरे को पता था लेकिन मैं पिक नहीं लेगा ढंग से। अबे यार 88 वाइपर और 26 जेट, दो सीट। एक और एक फ्लावर्स गंदा मारी। जेट अभी भी लो है इसने। One enemy remaining. वही है आप ले गोश्त ना शरीफ ले भाई। ज्यादा महंगी आइटम लिया करो, स्किन का चक्कर नहीं। अरे लेकिन मैं शरीफ चला ही नहीं पाता ना, प्रॉब्लम ला मेरे को दे दे फिर। है। अरे मुझको दे दो Gotta go. भाई, चलाऊंगा घंटा देने। I'm out of here. ऐसे घूम के और टपली, Go, go, go. ऐसे घूम के टपली, मेरी घूम के Gotta go. घूम के। कोई काम के लिए मैं हूँ। ये लीजिए। I'm out of here. क्यों दो यार? महंगी वाली दो। दोनों 2900 की। Out of charges. Gotta go. महंगी लग रही है। Out of charges. जेट कुछ चैंपियंस का लिमिटेड टाइम है। अबे मैंने बाय मिस्टेक भाई वो बैक फ्लिप मारना सीख लिया भाई। वाह मेरे को भी आती है भाई अब तो। Wall raised. वाह भाई वाह, क्या बॉल है भाई। थैंक यू ब्रो। Got one. इजी खेलो जेट सोवा पे उतर गया, सोवा पीछे। One enemy remaining. This. I'm out of here. Sucked. I got it. Go, go, go. Healing. Remember, stay out of the fire. Gotta go. Super high level tactics. I'm out इन लोग of को here. ट्राई हार्ड करना तो हम भी दिखाते हैं क्या होता है। तो पिछले लेवल में जिंदा थे क्या? Go, go, go. जिंदा थे? I'm out of here. क्या बोला? I'm out of here. सॉरी मैं पिछले लेवल में जिंदा थे क्या बच्चा? तेरी आवाज समझ नहीं आ रही तेरे को तो। हाँ सही में सही बात। Gotta go. महंगी क्या फ्लैश है ब्रो, क्या माइक नहीं है ना ब्रो। अरे मेरे को क्या पता तू तो पता था। भाई। अच्छा टाइमिंग ही बेकार है। दो क्या देखिए कितने बदतमीज है भाई, दो बंदे एक साथ पीक ले रहे हैं अल्ट के घुसना। छी भाई अरे छी ये भाई। पे आना है। ए पे जाना है। ये पे जाओ भाई। सोवा को 101 दे के आया हूँ भाई मैं। 101 मारा मैंने सोवा को। No charges left. सोवा को 101 दिया है। इजी किला तुम्हारा, ठीक है सोवा को मार देना। Last player standing. इतनी देर बैठना नहीं होता। भाई अबे काट क्यों नहीं रहे भाई? काटना था भाई। वाओ छोड़ो वाओ छोड़ो, तुम लोग क्या कर रहे हो उधर जाके? सभी मर रहे हो। मेरे मैं बोल रहा हूँ को भाई मैंने बंदा मारा था भाई, फर्स्ट ब्लड लिया था। और वो टीवी पे बैठा था। Anything can still happen.
Remember. 8 सेकंड टीपी Go, go, go. कैमरे का टीपी होता है यार, क्या होता है? अरे अरे मेरी तूने बात टीपी नहीं किया था क्लिक? टीपी अरे वेट आई तू मेरी बात कोई सुन टीपी होता है तू वो। तू गेम छोड़ दे ब्रो फिनिक्स का अल्ट पे बैठा था वो। ऐसे I'm बोल out of here. देसी भाषा में टीपी कहते हैं। सस्ता टीपी वो तो टीपी है, वो अल्ट से टीपी होता है। Shortcut. Going up. भाई क्या यार तेरी वॉल है Almost out. निक्की सी वो है, निक्की सी। मैं बोल लगा हूँ कैसे रिपीट। निक्की सी। दो लोग ए पे हैं। नियॉन के साथ फैंटम बहुत है तो गया। मैं ब्लाइंड देता ठीक है कोई जरूरत ही नहीं है, मैं खेलूंगा ही नहीं ना, उधर से खेल रही ना। अरे लॉन्ग का प्लांट है ना, इसी अपना गेम है। अबे क्या नो Nice try. 120 मत मरो यार। 120 भाई 120। तेरे भरोसे बैठा था मैंने तो कॉल नहीं दी, मैंने मैं कुमार नहीं खेलूंगा। सुनता नहीं है तू, ये बात तेरे में गलत है भाई। सुनता क्या हेलो मैंने कही थी मैं उधर नहीं पीक लूंगा, उधर से। पीक नहीं लूंगा तो ठीक है बट उधर बैठ तो पीक नहीं कर रहा अबे दूसरा एंगल देख रहा था, उधर से मार के उधर से बंदे आए थे ना, नियॉन उधर से उतारा था। नहीं होगा डिफरेंस सबको एक एक एंगल देखना होता है ना, एक ही एंगल देखेंगे क्या? 144 सेज यार बच गया। ओपी ब्रो ओपी। नाइस वन 120। अबे 120 वो भी था नियॉन भी। पता नहीं, ये बताओ कि स्किप क्यों किया था मुझे? अरे डिस्कनेक्ट हुआ था भाई। Gotta go. Gotta मैं go. टीयर 5 पे आ गया। चैट में भाई, चैट में चैट। लो भाई एक बाय मांग लो भाई मेरे से। तुम ये जा रहे ज्यादा। टॉक रख ले ज्यादा I'm out of बेटर here. क्या? मैंने भी रखा ही हुआ है चैट पर टाइम में शांत रहता है तो पुश टू टॉक रख अरे मैं बताऊँ टीम वॉइस में बात करता हूँ ना। Go, go. हां तो पुश टू टॉक रख लेना There we go. Here we go, let's go, yo. Stalking. Shortcut. Out of charges. अबे भाई नो बंदा। प्लान दे रहा हूं मैं लॉन्ग पे रहो कारने पे मारो पीछे रहो क्या यार 3 बंदे भाई, क्या है यार, किस्मत ही गंदी भाई। 3 बंदे। पीछे रह पीछे ओ भाई क्या मारा है भाई तू क्या मरा तीन है? लोग तो सीटी हैं। अबे तो चौथा ये रहा सब साइड है पीछे कहाँ जा रहा है? अबे भाई स्पेक्टर से इतना लॉन्ग खेलोगे भाई? वाह भाई स्पेंटम से इतना लॉन्ग खेलोगे? क्रेजी है भाई तुम लोगों का गेम, इतना लॉन्ग। जी वाह क्या छुप रहे हो भाई, क्या छुप रहे आप आगे जा रहे अब आगे Don't get अब आगे जा रहे हैं। जो एक किल मिला था वो भी ले गया भाई। जैन भाई नहीं Gotta go. ये I'm out of here. I'm out of here. Go, go, go. ना फैंटम दे भाई जरा। This is gonna be fun. अबे यार फिर मैं ही दे। Gotta go. Wall race. Coming through. कहाँ की वॉल बना दी भाई ये मैंने? वाह वो तू जाने नाइस बॉल गई। बॉल जल्दी खत्म है भाई इसकी, हार्बर वाली बॉल अच्छी है। Take this. हट जाइए लोग पे। भाई 78 है वाइपर। Go away. लोआ भाई सिटी भी है, सिटी भी बंदा है, सिटी सुपित ब्रो यू कैन यू अल्ट ए मेन। भाग जा ना वाइपर घुस के मार के, वाइपर घुस के मार के। वॉल टूटना वाली है। Last Hold player on. standing. भाई कहां भाई से? तू क्यों आगे क्या पागल है मैं भाई। रोटेट बोल रहा हूँ, तुम लोग घुस रहे हो यार। अरे तो वो आगे क्योंकि मेरे पास वो था अरे इसने तो मैच के पीछे चला गया। One enemy remaining. मॉली डाल मेरे मार्क पे मॉली डालना। हाँ यहाँ पे 30 यहाँ खेल seconds रहा है left. वाइपर, एग्जैक्ट पोजीशन। गन निकाल के रख। भाई तू आगे वो चला नहीं गया, तेरे जाएगा। पीछे मैं चला इसका गया, अल्ट है। तू वापस आ गया। यहीं ओपन प्लान डाल दे बिल्कुल, यहीं पे 10 seconds left.
planted. भाई धोखा हो गया क्या? अबे मेन चला जाए यार। आ गया। बढ़िया। अच्छा तुझे मेरा कॉल ही नहीं आ रहा होगा है ना? I'm out of here. I'm not tired. वेंटर देना। Go, go, go. फ्रिज भैया। I'm out of here. Need a drop. ये आपके वाले तो नहीं है ना? Need a drop. बाय करना भाई, लड़को बाय करो। पैसा नहीं, सुप्रीत बाय करो। थैंक यू भाई। Together. अरे बहुत भाई, गंदे हो बोल तुम, रहा इतना लाउड रीड करने को कौन बोला था? अरे लाउड रीड कहाँ कर रहा था मैंने? Out of charges. Out of charges. रुक जा रुक जा रुक जा। Out of running low. सॉरी सॉरी, अगर बुरा लगा हो तो कोई दिक्कत। वो लोग रोटेट आ रहा है। भाई मस्त। रोटेट आ रहा है, जल्दी घुसो। अरे सॉरी भाई, गलत कर। Healers down. For you. और नियॉन टैग है। क्या वॉल है भाई? अच्छा यार मेरे को उसकी वॉल की आदत पड़ी है। Get out of my way. I'm out of here. बाप रे भाई, गलत भाई। One enemy remaining. जेट भी इधर ही था Out ना of शायद? charges. हाँ जेटे करिए। Out of charges. अबे भाई नाइस। मूवमेंट तो है भाई। नाइफ वेस्ट हो गए भाई उसके, 2-3 नाइफ। Gun here. और थोड़ा सा कर सकता था ना, उछलना कूदना भी था बट नहीं उछला। जा। और ऑफ सेव कर रहा भाई वो। या। ही सेविंग ऑपरेटर। नहीं बच पाऊंगा। ऑपरेटर। ये मेरी स्किन उठा ले, मेरी स्किन उठा। ये मेरी स्किन उठा। अरे यार स्किन का चक्कर है। I know. I'm out of here. स्किन का चक्कर तो है। मैगी की उठा लेगा चलो। नहीं भाई तुम गलत थे, वो नहीं उठाएगा। और बताओ भाई लोग, क्या हालचाल है तुम लोगों के? खेल रहा है ये तो नहीं अभी मैंने ये लगा रखी भाई, रिवर। दियो जरा। ले भाई अरे नेकी और पूछ पूछ। वो ओम है ना सामने, ओम मत लेना मेरा आर्ट पूरा हो We I'm out of here. ये वाला। यार मस्त एजेंट है भाई नियॉन। तो स्पाइक दे मेरे को। मजा सा आ रहा है। थोड़ा सा ट्राई हार्ड कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा। शिफ्ट कर। क्या पता। ये देखो। अब मत हो ये, अभी मत हो। सॉरी बुरा लगा हो तो। बाय बाय, गुड नाइट। Watch out. So dead. Hi. I'm pissed. This way. One enemy remaining. Go, go, go. और मैंने खराब हो अब मारना। I'm out of here. क्या कर रहा है? भागते हैं। अबे भाग तो रहा हूँ। मरना मत। जिगल कर तो रहा था भाई, उछल तो रहा था। इन उछलते ही मार दिया भाई। Here. माउस ऐसा से घुमाऊं क्या? मरना मत। मौली कर दे, मौली। देखा क्यों? मौली करना था, मौली बच जाता यार ये। Last player standing. पहले अबे वो ये कहता है अबे भाई सॉरी। ले भाई ये क्या ये क्या बचा हुआ गेम भी भाई। तो गए। Go, go, go. भाई 4v1 में सबके सब मर गए। Go, go, go. अरे तो ऑफ थी अबे तू क्या अब ट्राई हार्ड करना है क्या? ट्राई हार्ड करना, रुक जा भाई। भाई बहुत बोल रहा भाई, मुंह बंद कर रहा होता हूँ। Gotta go. बोल रहा होता तू। रिवाइव दियो। Cheers. रिवाइव दे, मैं बाय देता। Need a drop. भाई मैं रिवाइव करने में और हील करने में। स्पाइक दियो। Let's go. रेंज में। में स्पाइक दियो। Gotta go. अल्ट पे चल जा, अल्ट से नहीं किल कर, अल्ट से किल कर फटाफट। रुको जो स्पाइडी दौड़ रहा हूं, लाइन देता मैं। ओ भाई हट से किल। रेस। अबे किधर था ये? सजेस्ट कर मेरे को करना था भाई, किसको कर दिया यार?
अरे तुम लोग साथ में आओ ना यार। Last player standing. Spike down B. Defenders win. चलो भाई बढ़िया है, खत्म तो हुआ। अरे यार इतनी देर से बोला पुश टू टॉक क्या मेरा, दिक्कत तो वही है भाई। इतनी देर से बोले जा रहा था मैं रोटेट कर लो 4 बंदे उधर, वो देखा पुश टू टॉक क्या मेरा। यस यस सर। हेलो। हाँ हाँ वाई नॉट, एक डेथ मैच लगा दीजिए बड़ा फट से। लीजिए। हाँ हेडफोन निकालो बाल टिक कर। Just need time to yeah. Still enough. Match found. My patience is waning and the sun's shining. आई अबे यार ये क्या मैप है? अच्छा मुझे लगा कॉम्प लग गया इस मैप। अरे हाँ बेकार मैप लगता है, अच्छा नहीं लगता। मतलब अच्छा मैप है, मेरा केओ इस मैप पे बहुत अच्छा चलता है। मैं तो केओ मेन हो गया हूँ भाई साहब जो मैं हगाऊं उसके ऊपर पूछ मत, जस्ट डोंट आस्क। मैं तो पूछ भी नहीं रहा, आप ही बता रहे हो। यार न्यून खेलने लाइफ में इतना सुबह नहीं हकता मैं। क्या लिखा था मैं आधे घंटे पहले। अच्छा अरे मैं नहीं खेल रहा बा। अरे ये क्या हुआ भाई? अरे ट्राई हार्ड भाई, डीएम में ट्राई हार्ड कौन करता है? बहुत मार पड़ रहा है। और बाहर आ जाओ, अच्छा चल रहा है हाथ मेरा। डेथ मैच की कोई बाहर आ जाओ, डीएम से बाहर आ जाओ, खेलते सीधा सीधा कॉम्प में एंट्री करेंगे। कॉम्प खेलते सीधा। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अरे यार मेरा दोस्त बुला रहा है वीसीटी देखने। तो नहीं खेल रहा है तो? नहीं सॉरी, आप भी वीसीटी देखो, गेम सेंस बढ़ाओ, गेम सेंस गेम सेंस बढ़ाते चलो। वीसीटी जा रहा है, आज वीसीटी देखते हैं साथ में। चलो भाई अब वीसीटी देखेंगे, वीसीटी टूर्नामेंट। मैं तुम्हें एनालाइज करके बताऊंगा कैसे खेलना है वैलोरेंट, क्योंकि मुझको आता है और मेरे को भी सीख लूंगा थोड़ा सा नया, कुछ कुछ तो नया स्टार्ट आता ही है हर बार। हर वीसीटी में एक नया स्टार्ट मिलेगा, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, करते रहना चाहिए। भाई
स्पाइडी भी था, स्पाइडी भी चला गया। प्लान कैंसिल, वीसीटी का प्लान कैंसिल, वो मैच में गया। अरे फिर वैलोरेंट आएंगे और एकमात्र सहारा वैलोरेंट। क्या करेगा, इस वीसीटी देखना है, बताओ। कॉम्पी खेलते भाई, कॉम्पी कॉम्पी कॉम्पी। और भाई रेटेड है क्या ये? और बाप रे भाई 11 फर्स्ट ब्लड, 4। अब असेंडेंट, ये क्या लोचा है भाई? असेंडेंट रेडियन लॉबी में असेंडेंट प्लेयर किससे भाई? हाउ इज दैट पॉसिबल? रेडियन लॉबी में असेंडेंट बंदे कैसे आ रहे हैं? ये तो बहुत ही डिफरेंट है भाई, पहली बार देख रहा हूँ इतना लॉबी में। वाह वाह वाह, क्या लग रहा है ना भाई, फुल लॉबी रेडियंट का। नहीं तो मैं देख लिया, अपन लोगों ने, आगे के मैच देखते हैं। शी 12 भाई 32 में। हम भी डेथ मैच खेलेंगे गाइस।
Match found. Death match. Warm up. Dominating. Remember, wipe the prints from your guns. It's just good crime scene etiquette. Fight. Now, where to set up shop? Hostile removed. Buried. My eyes are better than yours. Foolish. Put down. Three out of 5. गाइस 140 वैंडल से कब से लगने लग गया? क्या भाई, गेम ही भाई गंदा है भाई ये। भाई 140 बंदे बॉडी का ट्राई देते हैं पूरा पूरा, क्या है? Allah. 3 out of 5. बताओ भाई, ये देखो सेज को। Deleted. हाय मार दिया भाई। वो सेज बैठ के बस क्राउच करके स्पैम दे रहा है और हम मरे जा रहे हैं।
4 out of 5. Dominating. 10 kills remaining. Three out of 5. क्या यार Five kills remaining. No hard feelings. One kill remaining. Never come back. I will take you apart. आओ गाइस VCD फाइव VCD लॉकिंग देखेंगे गाइस ラストはシェイドスこのラウンド3キル目8対1ソモの活躍によりかなり削れたラウンドになってはいたんですけれども ऐसा ना डायमंड 3 हुआ डायमंड 3ここまでシェイドスワン I'm kidding. I'm kidding. But I agree though. They need a mindset shift maybe. Maybe they're trying too hard. I don't know. I don't know if that's the problem. Maybe they're like It's hard stressed to out. say. しまったという結果になったかまではわからないんですけどもただやはりソモの We are watching the Bronx Valorant Japan है ना ये तो Valorant Japan ही लोग हैं तो फिर हम तारीख की देखेंगे यही बेस्ट है That excuse is coming out. Alright, at least we have the right stack here, and it's a buy round. Yes, this might be actually. This actually could be the game changer. The op. We get okay. Honestly, truthfully, 3-9 here, we win the map. No joke, they 3-9 this shit. I put on my NRG jersey. We're taking this shit home. Alright, yes, yeah, let's go, let's go. Quiet performance here so far, but Yep. really an individual.
away from this. And actually, Yeah, ये रहा ना. NRG, that this is going to be a rotation. 30 seconds. I mean, 30 seconds left here. I don't think they're going to beat NRG to this site. Obviously, Som tucked all the way into Snowman. I love Victor backfilling this super quick as well. Immediately. Safety, making sure it's not going to be a double pump, a double fake. No, it's going to be Oh, Som. Do what you can, CS. buy us time, buy any seconds you can. Plant's going to come in, does it get stuck here? 10 NRG seconds का है ना. now, it's down, it's safe. Into the post plant, crashes, handles Starzo. Now down to 3 players. What more can these 3 do? I think I heard the Viper's pick committed. Coleman's popped it. He's popped it, and rightly so, but Victor on the flank. This was happening a long time ago. Ard is still popping off shots, finds Shados. Down to Goldamenta and Trex here. Close on the side, and Crash is trying to reveal him. Crash is going to get Trex, and now just Goldamenta, and he's dealt with. भाई एनर्जी तो हार रही भाई. NRG stem the bleeding, but is it too little and is it too late? I said for this to go in Koi's favor would have been the nail in the coffin for me. Again, it will be nothing short of a miracle. They can close this out with the best possible result. It was a Prime Gaming flawless for NRG to get back on it. Definitely didn't. So scrappy. Wow. And a timeout now for Koi. So maybe let that one breathe a little bit. Just let it settle. They're not under any pressure right Mm-hmm. now. Not really any bad decision making on the side of Koi here. This just felt a little more of a, I guess, a preemptive rotation coming through, and NRG happy to kind of commit to some of the information they do receive. Obviously with the Owl drone coming through, the knife actually following through, I think pinging 2. भाई मजा आता है भाई वीसेट डेक सेटअप में ना. का सेटअप देख के बहुत मजा आता है. This is posted up. He wins those all days long. Like if there's no flash to come over to actually get Wolfen in a position to swing that's when you know. This is always good for that one. Yeah, he's not going to miss that. Absolute sin. So good to see him finding that, and then knock-on effect of it again. Good stuff. Got to say the crowd here pretty lively already. It's a pretty small start to it. It's your first game ever coming out here. Crowd's lively. Kind of liking it. But all said and done, Koi now with a chance to maybe hit that adjustment. Now noting that Artist will probably have the operator still in play. That's going to be a factor. How do we approach this? How can we maybe facilitate? Time out है, time out. We look somewhere else. Again, it being on the Sage, how kind of mobile is he going to be around the map? Seeing immediately him make his way towards B. If he's going to become the B site anchor with this operator, it'll be a big switch up for him. The already इधर एक. Find something elsewhere on the map. Som making his way over. एनर्जी अटैकिंग में है. Mid intention here from Koi. नहीं डिपेंडिंग. मिड वाला सिनेरियो. A couple of bodies is usually Wolfen. Chaffness. Slow creep behind the orb. Yeah, they have not done this walk before at all. So the fight will be towards FNS if anything. 3 players there, and this hasn't happened yet. This timing can be really uncomfortable. Now we'll get the early warning signal, but beyond that, it's really on him here. He can spam the wall off this alarm bar as well, actually. You can see the nano swarm on the other side of it. They've got to be asking questions. They've got to be. That timing's starting to get curious here. FNS still steal focus. He's going to hit the steps here, and now he's going to see the players. Falls away from this, and probably rightly considered. Quick trade does take down Wolfen, but the site's now under scrutiny. We do note that, again, it was Artist who hit that early rotate towards the that B site. But अबे Som. And crashes on the quick flank. He's going to miss the vast majority. There's still 1 player even behind this Trex, waiting ever so patiently for his time. The plant comes in, the timing is close. अरे बाप रे भाई टाइमिंग भाई. भाई लकी भाई कितने लकी हो रहे भाई सामने कोई वाले. And now it's just Artist, completely navigated around, didn't even get a chance into this round. I love that. How do we get around the up? Well, we just play it up the guns, up middle. I'd love to accredit this towards the awareness of being, it's going to be on an extremity, right? The weakness is going to be in mid. And what's FNS got to deal with is 3 bodies barreling into kitchen. I said, even here with the setup, they're stacked up as 3, ready to explode on the back of that alarm bot contact. This will find a consolation, but revealing himself here. Prone to losing this now. Tracks on the first swing. And Shados picking up the slack elsewhere as well. Might even catch him. Gave it a good fight. Operator gone now. And the round back for Koi. Fantastic call from, I imagine, Coldamenta. I feel like that's the first time we saw them up the guns. They knew what they were doing. And it's not a bad call from NRG. By all accounts, you're only trying to play off of what you know. Make that, maybe that next step reading, trying to place him into middle somewhere. But again, it's Sage, not hypermobile, not able to really get out of those scenarios. So again, you don't have that capability. So 2 to 9.
Money, it's missing bits and pieces here. You can see Victor without armor, you can see odds and ends lacking, but Artist does still have the operator. So this time around, what's the plan here? They desperately need this third. They really do. I don't feel comfortable about this second half at all. 3 towards B main initially here for Koi. Coordinated to be the fourth. Shados is going to be on crowd control elsewhere. Victor looks a little curious. Towards Nest at least on A side. A pause for thought here for Koi. Hunter's Fury available. Res available. The other side of things, FNS does have that lockdown and preemptively invested here with over a minute left on the clock. Just to force them back into spawn here, as like I said, it feels just a little desperate. Don't really secure the space on the back of that. I'm really not sure about that one. No, I was kind of imagining if someone backfill it a little exactly, further. Yeah, take the space, force them even deeper. There's a pinch coming through from Victor, potentially with this aggression on A. And here's the burst again. Orphan instantly going to fight towards Som. Som great dealing with the first though. Front line dealt with. Now you got to look towards who else is remaining. We know that Koi are running as a pack in this. There's 3 players who are the heavy hitters and they're mostly still standing. Some though yet to be cleared fully from this. Rez comes in. Do they get a partner? Shoot! She! Oh भाई, nice one. क्या मारा है भाई? सॉम ने मजा दिला दिया भाई. 3 rounds is really the bare minimum. It's a fine margin, yeah, the bare minimum. Quietly on the other side of things, Trax has just had an insane half of Valorant here. Yes, he on has. Icebox for Koi. Just such a consistent player. I saw him hint at this. Oh, it doesn't get much better than that, right? They line up for him. You can see a little bit of joy to close out the half for NRG. The consolation at least definitely needed that one. Yeah, might bring him back a little here. Give him a little bit of that fire burning in the belly because they definitely need a wake-up call. It's 3-9. Chet's cracked a smile. First time in a while. First time in a while. But yeah, this has to be. हो जाएगा भाई, निकल जाएगा गाइस. 9-3 हो गया भाई. 9-3 कर से भाई. अब तो जीत जाएगी एनर्जी. Their map choice. They've got 3 rounds. Let's hand it back to the desk. Thank you very much, Pansy and Hypog. If you're an EMEA fan, you're having a great time. And we heard in the interview before the match started, Shadow said they had 1 month to prepare for this. And Mimi, this looks great for 1 month. It looked really well put together by Koi, and I was particularly impressed with just the half that Coldamenta was calling there. And one piece of that was kind of a भाई इन लोगों का गेम सेंस कितना ज़्यादा होगा ना हमारे से. and that was Wolfen's Jet consistently इतना देखते हैं भाई VCT. and breaking the turret. We have a clip to take a look at of one of those rounds here, where as you can see, right off of the rip, well, we don't have it quite in here, but at the beginning, trust me guys, that turret was broken down by Wolfen updrafting on top of that tube. And in the late round, that meant that Finesse had to consistently be that guy, and here it is right now, who was locking things down, playing in mid. Normally when you play that Killjoy, you can kind of set and forget, set up that utility, stay in range, and you have that information. But Koi consistently denied that, meaning that for the side of NRG, they had to kind of constantly change how they were playing their defense, and when they were calling so well, it was pretty tough for NRG. Yeah, it was just all Koi in that half, but you know, going into the next half as well, Shados was on his debut on Killjoy, and Achilles, the guy on the other side, has played a lot of Killjoy. Yeah, this has been a pretty brutal, and unfortunately for Finesse, we're going to put them side by side. Shados has had a whale of a time. Round 3 already had the lockdown. They did have to commit it to be able to get that bonus conversion, but they made it work. They've been running away with it, and that's as an attacking Killjoy. Shados has been popping off for this debut pick, and for Finesse, we've been seeing, as Hypa called it, some desperate plays being made here, some desperate calls being made for this team that look very shaken up, especially in those first few rounds. I mean, it took until round 10 to even get an off into Artis's hands. That's something that you want to do as quickly as possible, and having to delay that until 10 is brutal. So we need to see a big step up here for Finesse. He needs to have a Shados-esque performance as he gets ready to go on this attack. He absolutely does. At an international event, this is the first time that this NRG core ever has picked this map, so we got to see what they were cooking. Yeah, they got the Night 3 curse, the EU team curse, the first match curse. Everything is against NRG right now, but Pansy and Hypog, they do have a chance to pull this back. You're absolutely right, Yinzu. There's every opportunity here, but we did say this is the bare minimum. We said 3 is really the buffer you're going to need. We have to put into context, you still have Trex having a very big game and Shados to boot. Well, this is the thing as well. Yes, there's no comfort in the scoreline, right? No. But there's also
Not a lot of comfort coming out of that half either. In terms of individual performances, it's never nice to drill down to that sort of level when we're looking at the numbers. Thank God Som closes out that half in the way that he did. There's a couple of times there अब एनर्जी अटैकिंग मांगे right and center for NRG. That has to be हाफ cleaned up here for the second half. अटैकिंग गेम मैप है ना वैसे भी नाइस नाइस And well, for starters, they are getting dealt with. Good work to begin. Yeah, they're very aware that this confidence ओ बाय is happening, and it is. So Stars are कितना going to back क्या away here. बढ़िया स्पॉट है भाई छुपने के लिए Willing to fight on this, spotting them crossing towards the A site though. So already going to have at least 2 bodies here. We're going to see a little bit of the setup in play. FNS though, trying to lead by example at this point here. Early intention showed here as well for Wolfen. Happy to take these opening engagements, and Koi happy to build around him. Get the clean plant here. साइड मिल गया पूरा Standing here for NRG. It's a numbers advantage. Koi have to get something done on this retake. Wall going to burn up a lot of time here as well, Lauren. I don't see a comfy way back in at all. They already have to back away from this. There's no step to it. There's still so many bodies on the site. 5 still standing for NRG. The ball's only just coming down now, and there's only 1 chunk removed. Okay, Shadows though does connect quite quickly. Good information on the second. Nice. Follow up. It's Som dealing with it at the back of the site. nice 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 They need this one to work out. ना भाई निकल दे भाई पहला राउंड निकल गया बस अब 2 राउंड और एक राउंड और निकलेगा 6-9 हो जाएगा 5-9 हो जाएगा ये 5-9 They're happy to try and fight the remnants of that early attempt from Koi and slot themselves right onto A site. Like I said, that wall just bought so much time. Felt like a good 15-20 seconds until finally a chunk was removed. Love to see that. And it is going to be a process here because we can't really, when we look at NRG, you don't have that icebox knowledge to depend upon when you come to that core 3, even to an extent. You know, you wonder what they're going to look like on this, and again, get to at least determine the pace this time. But Koi still looking to test the waters, and why not? They are on to the classics, the frenzy, and just a touch of utility around it, but not a great deal. Just testing the waters, and Som on the case. Bulldog. Wolfen though, and this is in a comp that doesn't actually have a flash, right? There's no stun, there's no flash. It's only really Trex's utility to really support him. But in my eyes, he's absolutely delivered so far. Let's see what he can get done in the second half as well. Early intention shown from Koi once again with that tube walk. The dart goes through. Let's see on the back of that. So proactive. They're coming back. They're clearing this space outside A site. And this is on a round with just classics to work with. And here we go. There's going to be Trashy's notes. At least 1, potentially 2 now. So they should be very aware that there's now going to be further presence. Oh, messy in the end. Not what you want, but they should be fine now. Going to lose out on Victor, but I doubt Trex will get anything. Yeah, so comfy, 4 alive, Farm coming in. NRG building back into this game. Yeah, and they come into the next round as well. I have to see exactly how it lands, but with a Vandal to work with in the hands of Ardis. That Bulldog for Som. See actually what's going to round this purchase out. Crashy's 1 away from the Hunter's Fury. The potential to get that online in this round. Boy, definitely with the upper hand here. And the big question arises now. How many different looks will we see from this proactivity on the side of Koi? Again, you got to credit the protocol once again for Cold Amenta there. So proactive to clear through A side. They don't want NRG to get away with any free space. So if we see that continue into the buy rounds now. They walk down tube here. It's 3 towards A site instead, Lauren. Yeah, and got to say, Shadows is in a world of danger. Hyper isolated. Even the rotation through mid can be noted, can be seen, can be punished. इनसे हाफ कुछ का हाफ अच्छा बस एक का भाई है बस बाकी सामने सबका भाई है इधर अपना एक का भाई होता है भाई देखो अटैकिंग अरे बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया ए नाइस वन सॉन्ग Nicely played round so far by NRG, but it is been left on a platter here. Shados, Wolfen, and Trex trying to navigate a way through, and Som can play that back line. Ardis yet to be checked. ये nice चलो अच्छा Extends a little bit of play here. 3v2, and Som perfect timing. ये nice one सॉन्ग बढ़िया टाइम बाय कर रहा है टाइम बाय
बढ़िया भाई, निकाल दिया मैंने। बोला अब अच्छा है ना भाई, बोनस जीत गए। अब तो बाय राउंड भी जीतेंगे। अब ये राउंड भी हाथ में, क्योंकि सामने बाय ही नहीं है बंदों पे। I'm going to walk tube this round. And like I said, it's the fact that Starzo's behind that turret, the other side of it. That just भाई makes it इनका so अटैकिंग का अलग ही easy for तरीका Shadows. है भाई। You can kind of trade that off if they get deep mid control, they get deep A side control somewhere else. But as soon as you get stuck behind that turret, Shadows is left in a world of hurt. And there's no, I mean, what can he do there? Pop off, find 3 kills? That's the only solution to that. Yeah, it's. I don't know if there was maybe not a misread, but maybe a gamble towards it. Maybe testing things out. I don't know. But again, it's put them in a position where they are back down to the pistols here. So this will build again an opportunity for NRG to close the gap, and they're still stuck on 9 for Koi. NRG just building that confidence as well, trying to feel out the game, warm into this a little bit. They certainly need a bit of that. Maybe some Eco Cobra frags for Ardis can help the matter too. भाई जीतेगी भाई, लग रहा है। एनर्जी का गेम है। 4 बंदे हैं यहाँ पे। As of yet, the spike not committed. A little bit of a poke here from NRG, and do have the space to rotate. अबे सब रोटेट कर रहे हैं भाई इनके भी। They have a read on this as well. Only really the frenzy in the hands of Shados to work with. As it stands, NRG is still stuck over towards B long, very methodically working. They do still have utility to clear towards site as well. 30 seconds. But it's the time. It makes me nervous, even against these pistols. One player drops, Spike gets lost, Util gets burnt up. 25 seconds now. Mike, this is running down to the wire. Som trying to do his heroics once again. Som 18 seconds. I'm still waiting for that plant to come in. And if it's बहुत बढ़िया भाई। ये होता है एंगल होल्डिंग भाई, देख रहे हो तुम लोग गाइस। They want to find that crucial kill to open things up and closes out with 3 for the Prime Gaming flawless. And a little more confidence in their step now for NRG. Som actually leading the charge here, 17 and 9, top of the scoreboard for them. And this ultimately कमबैक है भाई, कमबैक। back to a tight scoreline in my eyes. Actually, maybe behind this purchase here, I mean, other than the operator purchase, Wolfen won off the Blade Storm. There's a chance to scrape together maybe some rifles in the next. This is a big one for NRG, actually. Potential to get everything online in terms of this ult cycle. But Hunter's Fury and the Viper's bit available in this round for Crashes and Som. They're implying pressure in middle as well. You've just seen the Aldrone go through, and Wolfen's waiting with that operator. One of the young guns to watch if you are keeping track of EMEA. Didn't expect to really see him here, but let's see how he does with operator now in hand. ये वुल्फेन को मैंने कभी देखा नहीं यार, पहली बार देख रहा हूँ। Yeah, very much like a technical player so far. He's not, as I said, not going to be your highlight player. He's not going to be sitting there top of the scoreboard, but he's certainly doing the damage. Lovely work. Big connection towards Victor. That's now a little bit of a problem. You're going to isolate FNS if he tries to stick around here. He can't do much more. It's down to the 3 there, hitting towards the site. Sorry guys, sorry. Around potentially. Starzo yet to get checked on, and Trex has found Crashies. This is a bit bizarre to me, and Starzo just back away here, gets away with his life. No success being found. FNS, yes, has gone deep towards A, but to what value? There's still utility in play here. Just now dealing with the turret. The alarm bot's still there, so Shadows is going to know nobody's followed through on that. Som, how much can this one man do? This again is calling for such a huge round, and he's actually in the right place for it. Gonna fight Cordamenta. There is a second on the site as well, but it's gonna be Starzo just worming his way around trying to find the angle. अरे यार नहीं। अरे यार 1v4 हो गया ना भाई। Sit on this one. The smokes are coming in. Starzo is safe, and it's 10 for Koi. Great response here in this round, but NRG creeping all the way up onto B side. I think it's only that recon from Trex that gives that away. It almost felt like Crashies had a free clearance with that Viper wall being up. The Starzo hyper focused. गाइस जो भी स्ट्रीम देख रहे हैं फटाफट से लाइक करो। I gotta say it. Yeah, I'm not sure actually who was in a position to deal with that dart. I love seeing Barbar camp, by the way. I miss Barbar camp. Great to see it. But yeah, it's only that recon that gives things away. It's a great timing from Trex to really bail Starzo out in that regard. But the only ultimate missing now for NRG, the lockdown.
So a decent फटा थैंक यू गाइस बढ़िया 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 position behind this, and looks as if they might try and commit behind this null command. Shados here, so most of his utility going to be rendered useless. Should be a clean plant here. Oh. Viper's pick going to go up now. Ooh, hold on. Response coming through from Trex here. One tag at least. मार 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 अबे यार Actually, no tag. It looked like he did get. बता नाड़ी सपोर्टर हूँ मैं क्यों बता भाई क्या कर रहा हूँ मैं ये नाइस अरे बहुत बढ़िया भाई बढ़िया Unlosable round here. Hunter's Fury, 2 snake bites available. पेशेंस भाई बहुत चाहिए भाई अगर तुम्हें बढ़िया खेलना है ना पेशेंस चाहिए देखो सेव कर रहे भाई अब ये दोनों 3v5 है और यूटिल नहीं है अगर हारते हैं इस राउंड तो सेव करेंगे आप Hinged on those 2 kills on the flank, Lauren. Yeah, it could have changed the outcome if they did potentially go the other way, but NRG pulling out the must-win round sort of deal. Burnt a fair amount, but absolutely worth it at this point, it feels. So going to convert here and close the gap on the scoreline just a touch. Not letting Koi run away, and a little bit of a hunt for the rifles. Wolfen's up. I was going to say Wolfen up on top of the hut there, back in spawn, almost getting spotted out. He did have the operator in hand. Obviously carries it across now. Fair investment here, but it's the null command. अटैकिंग मैप है यार जीतना ही जीतना Get this round done. Great awareness for FNS and Crashes just to be double stacked up here to secure that. Just knowing where that weakness would be, because you've invested Well, so no, what the much win on condition it. is. Yeah, exactly. The win condition is the post plant there. Beautiful, beautifully done. We go back in though, and again, Koi's money will be brought into question. They are starting to dip a little lower into the funds, and the scoreline's getting a bit closer here. Slowly, NRG waking up in this game, and Trex willing to scrap on this. Does need to back away. अरे बढ़िया टाइमिंग भाई बढ़िया टाइमिंग भाई ये विक्टर नाइस नाइस वन विक्टर नाइस वन हाँ एक और अब भिड़े एक और बहुत बढ़िया अरे बहुत बढ़िया भाई हाँ हाँ अच्छी गैम्बिट में था ना शेडोस तो पहले फिर वो बन गई थी गैम्बिट क्या कहते हैं उसे अबे ग्लिच हो गया नाइफ अबे नाइफ ग्लिच हो गया भाई शेडोस का भाई वैलोरेंट नशे में है भाई अभी भी And that's Koi being aggressive there. They're the ones that are happy to dig a little deeper, challenge that owl drone. But straight away, Victor barrels towards site. I love seeing that from Victor though. We needed a bit of that punch to come back in. We saw a little bit of that dabble of aggression on the first half. It didn't obviously work out as well for NRG, but to see them kindling that here in the second half is great. I'm glad you referenced the Neil as well, because actually, whatever composition we see him in, it becomes Victor and Crashies being the key stakeholders, right? Those are the playmakers. Yes, they're missing Ye now. Sure. But in my eyes, Victor and Crashies are two that actually, when they excel, those games for Optic. एनवी में थे ना पहले ऑप्टिक में थे ऑप्टिक में क्रैशेस और It's very stylistic to only what I feel like they can do as well. Look at this. Rapid on the hunt, takes so much space, continuing to pressure, and you're right, Crashies in combination as well. Beautiful synergy there. Loving that. Going to put a little bit more pressure back towards Koi now. Somehow, we're one round perfect. This away from a tied scoreline. But this is the beauty of single elim as well. सामने फिर बाय नहीं है One map can mean so much here. गया ये राउंड भी Dig deep early on. Now the money did get shattered. We saw it was very fragile even just the prior round for Koi. So this is poised to be 10-10, Mike. It's actually a comfortable amount of credits. Sorry, just tighten up the numbers, but Wolfen's going to be able to have the operator. Even here, it's 2200, 2800 to carry across. ये होता है भाई एंगल पकड़ने का तरीका एक ऊपर बैठा हो एक नीचे बैठा हो बढ़िया पुश करेगा तो थप्पड़ खाएगा बंदा सामने से आते हुए Defensive ultimates. Flip side, yes. Could argue there's a couple of counters there, but I say we came into this half with, yes, the odds stacked against NRG, but even here you come into the next, it's tied up. I mean, a loss isn't going to break them, but still, Koi in a pretty good position. Yeah, certainly the purchase will be coming back around, but they really need to show their diligence here as well for NRG. Don't be walking into stacks or any funny business. A lot of the time being purchased, Wolfen unable to find the connection he wanted. Wolfen and Shados breaking their ankles there. And the side looks like it's on a platter. Do they try and refight? Do they offset the timing? It looks like they try to. बढ़िया बढ़िया बढ़िया
अरे बाप रे क्रैशिश भाई मजा आ रहा है भाई देखने में मैच तो। अब की बार वीसीटी काफी चेंज हो गया ना क्योंकि इस बार का पैटर्न बहुत चेंज है वीसीटी का। चाटा More and more examples of that main stage confidence coming out from some of these NRG players. They need it. They needed it. Called upon it when it was most required. 3 rounds in the first half, and bear in mind, one of them was a gift from Som. This is pedigree coming in. This is that core 3 that we need to be looking at, and then the additions coming through as well. This is exactly what the doctor prescribed, and they are absolutely doing as needed. Problem being though, again, I was crediting that financial position for Koi behind that previous. They're going to come in 4 players sitting 1200 and above. I mean, NRG can basically buy out even if Koi do string together a couple here, find themselves towards that 12 round. अबे भाई शॉर्ट्स में बैठा है भाई सीडोस। I think actually you dig a little deeper and NRG, if they do rely back on some of these ultimates. Oh, I can't actually believe we're even here to start off with, and then you look at this scoreboard and there's so many factors to consider. Yeah. Technical timeout. Coming into 10-10, right? Tied up. Where are we watching? Tell me where it needs to be looking. Dare I say it, coming out this timeout, I want to see Koi start exploring the map again. Oh, get back to the aggression just a little bit. get back to being a little proactive, because Yep. that's the thing that Coldar Mentor is so good at doing. Dictating that mid-round, being proactive, clearing space, and then being in a position to have kind of a numbers favourable defense on one of the sites. Again, it's a big ask. When this half has gone the way it has, they've had 1 round in the second. Yes. I'm not seeing it initially here. Nope. Adjustment, yes. Shados over towards B. Well, maybe actually with this tube walk, we might even see it. This is what we've been asking for. Wolfen could have that opportunity. He did manage to find, I believe it was actually Victor even last time, but a new position playing off the back of the turret as well. It's a sketchy res. Starzo has to respect it for the time being. Has to back away from that. And might even have to wait for the retake opportunity to get that res back online. And I feel like this is a fantastic read because we did see that before. That walk down tube, only used once or twice, very rarely implemented. FNS with his finger on the pulse in terms of what Koi were planning to pull out in this round. This is so much pressure now. Yeah, Crashies has actually confirmed the information that actually Starzo isn't tucked into tube, waiting for that res. And they're going to police it as well. Look at this, bodies on the death marker. I love it. Shados is sweating bullets here. Because there's a big gap in kitchen. Yeah, big gap in kitchen. They could be anywhere. The information is so deep by the time they'll be on the site. And again, yes, they've cleared this far, so this adds to that pressure on this man here, Shados. How much can he do? Does he get checked on? When does he get checked on? Because they're still watching this flank, Mike. There is still information free flowing. So Shados, again, that time, he's got even longer on his own. This is the thing, though. NRG have a long list of options in terms of the plant spot. Victor actually settling for default here. I love this. Going back in just to ensure that res does not come through, and Som is putting in serious work. Shados finally pulls the trigger, takes down one on the site. Som's been found, it's a 3v3, but time, the KJ ult has come into effect, and Artist, don't forget, counter ult comes in. Nahi yaar. And now just 2, FNS and Victor, where do they go? Got to back away. Koi actually respecting the lockdown as well. Nothing detained here on either side. Time. They got to get a move on Victor. It's burnt up so much. He's going to have his knife back. He's going to have his flashback. He's got so much kit still to play with. Shadows still alive. बहुत util है भाई, बहुत util है. Victor's found Starzo. Shadows with a quick trade, but time is everything, and is running out for them. FNS, he's got to run in time. It's done for. It's 11 for NRG. What a round for NRG to pull out here. Absolute chaos, everybody. I mean, everything but the kitchen sink thrown at this round. But it's such a perfect read on both sides of this. That was beautiful. The clearance from NRG behind that res, and then Som posts up another. Just such an impactful round from him. And even though he falls here, like I said, both lockdowns come through, and all the time is expired. I mean, I think Trex has to full stick this. You can't fault him here. No. It's a high pressure scenario. There's no right choice in that, really. It's you make the best of what you've been given, and the heartbreak on Barbar. He knows that round could have been just the minuscule differences coming into play here. And now NRG finally in the lead. But like I said, though, Koi still had enough behind that purchase to string together rifles here. You're right. Coldamenta with the Viper's Pit.
some sense of security towards A site here. But the rest of Koi actually scratching their heads in mid right now. NRG actually feel, I guess like they found a weak point in this defense. This time around the turret is there. Shados. I wouldn't call that weak with Shados on it now. No. Flashes enough. As contact found, slips away, does call for help, but no one's gonna be there super quick. Yes, Trex does actually just really well. This is a little bit of an adjustment. Trex coming in to bail out is massive. Now they can start working this down. They would have at least noted 3 now, noting it all. That's the spike lost, and Koi crunched them in towards Kitchen. And you're gonna have FNS and Crashies, irrelevant to outcome. Crashies would have to pull off miracles here. And he's got the first step. 35 seconds, finds the second. Crashies is fighting as best he can, but being closed in on. अरे यार भाई नहीं भाई ओटी ना जाए भाई. How's the money? How's the money looking though, Mike? Is it? NRG should still be comfortable. NRG are fine. I'm looking at Koi. I mean, it's going to be tough. It's going to be an SMG or a Judge to throw through here to round out this purchase. But even on the other side of things, I'm seeing Artis down to 350 credits. What a game. What a game. I bloody missed Valorant. What a way to start the day as well. I mean, you're looking at that first half and you're thinking, well, I mean, this is the Koi that's shown up today. The second half. There's NRG right back at him. All the things we look for, all the things we liked, you know, that kind of like Crashies, Victor look coming in, FNS with some hot calls coming out as well. Som being such a really nice technical player as well. Some of the looks he's been doing, some of those positions he's been playing out of. Som and Trex this map have just had like some of the craziest rounds individually. In my mind, Trex changed how that last round went. That one pick, who I think it was on Victor. To bail Shados out, yeah. Shados would have been dead otherwise. And we've seen Shados on an island so often. And it's certainly no holiday here. 11-11, this is when your IGLs, this is when your coaches. This is another reason that this matchup is so fascinating. It's Coldamenta and FNS, two brilliant very storied, yes, exactly, and storied IGLs within Valorant, facing off here with blank canvas, right? Coming into this is completely blank canvas. God, what a dream game already. I'm loving this. And I know some fans will be like, oh, you know, NRG, such a close game against a team like Koi. Look at the caliber that Koi has, though. Really take it in. We go again. 11-11 could not be closer. Mike, what are we seeing? What is that lineup? All the way towards back. भाई देख रहे हो? No command popped over towards A site here. 4 players here so early on. ये राउंड निकालना है भाई सबको. नहीं यार नहीं. Oh, bye. Nice. 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 बाप रे भाई क्रैशी स्टॉर्म तो भाई किल रहे भाई तबाह के दोनों और विक्टर ने तो बहुत इम्पैक्टिव वाले किल्स जो है वो निकाल के दिए भाई. राउंड उनके नाम में भाई बहुत सारे. You could not ask for a better moment. The money will be shattered, Mike. It breaks the back of Koi's money. No ultimates available. Touching distance to the res, but NRG in a position to seal the deal on map 1 here. निकलेगा भाई. अबे बी पे एक है भाई. घुस जाओ भाई, चढ़ जाओ भाई इसके ऊपर. पता नहीं आता ना लेकिन भाई. Clear yellow. Shados once again will be tested. How many times have we said that in this second half? If he can just try and play his life as best he can, yeah, not gonna find it. Can't stall the plant. Nope. And there it Plant is. हो गया भाई. 5 alive. You still have Hunter's Fury on Crash. He's got Artis with a res as well. 2 snake bites, 2 nano swarms. Victor with the fragment. You've got to somehow disrupt the back line with this. Come on, this is going to be hard work. First touch on the spike, going to try and draw out the initial utility. There's a little bit of a look, but not too much intention behind it. Som willing to put life on the line for this now. Maybe even first contact once that wall does drop. There it is, say hello. Som says hello to 2 and bye. Finally goes down, but it's down to 3. Wolfen, Starzo, and Trex, how much more can they do? It's not looking likely. Wolfen, desperate, and desperation ain't working. अरे oh yes भाई जीत गए भाई एनर्जी भाई. ओ भाई मजा आ गया भाई देख के. Again, this is one with actually one of the headline plays here. Artis on your
screen at a very quiet map, right? Yes. Very quiet start, but everybody on the side of NRG, Som, absolutely stepping up to One the plate round. here. Yeah. That one round he I feel like pulled off. actually when he closed out that 5K, then call it the pseudo ace, whatever. After that, it was just from strength to strength for him. He kept going. That's beautiful to see. And again, you think morale-wise, getting that another round on the board, giving that little bit of a break there, pulling him back into the game because Koi were right at their heels. Kicking and screaming. The Kicking double ult. and screaming. That double KJ ult round that came down, you saw Barbar afterwards. He knew that could have been the one. That one kill between it. I mean, what an impeccable game. This is the beauty of lock-in, right? And this is the caliber of game we're starting with. Yeah, I mean, there was some crazy stat about how many times actually the 9-3 curse comes into effect. Yeah. That time, I mean, I'll be honest, that should have felt like Koi would have been able to close that out, but NRG just exploding into that second half. Again, even from the first 2 rounds, you can see immediately it was a completely different approach here. Got themselves right back in the driving scene. Unfortunately, a couple of the big positives from that first half for Koi just were absent in the second. Trex continued to deliver in the second, but I mean, I don't want to say Shados had a poor second half, but he was left on an island. He was left in positions where he had to really actually go over and above to really deliver. Yeah, now let's put it in context. ये वाला किल भाई बहुत प्यारा लिया भाई इसने. This was NRG's choice. So it was like, yeah, again, it's mad. It's like how many layers do we keep going down on this? But a 13-11, again, I have to give you credit where it's due here. Som to me was a little bit of a standout in that. Trex standout. You think about what Som did though, in my mind, he propelled the Benq है भाई, Benq XL है भाई, 2 4 5 6. I think actually you see a couple of rounds that build upon that, the rounds where Crashes and Victor are happy to kind of mimic that confidence, right? To build off some of that confidence and string a couple of rounds together is why NRG were able to pull this off. Yeah, I'm thoroughly looking forward to next. I've got Haven coming up next, Mike. Where I dare ask you for a prediction now. No, don't. Start to break. No. Is it break time? Yeah, it's break All right, time. we're getting out of there. We need to go and just take a break because that is map 1 of this entire tournament. That's only the start of things to come, so I cannot wait for what's coming up next. भाई अभी तो सेंटिनल्स का मैच होगा भाई. सेंटिनल्स का देखेंगे अपन लोग. बाय क्रेजी मैप भाई, बढ़िया भाई. हाँ, सोनी का नया मॉनिटर आएगा इस. बिल्कुल क्रेजी मॉनिटर है भाई सोनी का. 240 हर्ट्ज एंड 1 फॉर PS5 स्पेशली. चलो गाइस, आज की स्ट्रीम के लिए बस इतना ही. होप यू गाइस एंजॉयड द स्ट्रीम और बाय गाइस. कल मिलते हैं, कल मिलेंगे हम लोग वापस से रात में 10 बजे. तब तक के लिए बाय 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 गाइस. I got so much drink in me, wonder if you missing me. These days I can't fucking sleep, it's bad, I'm out here living dreams. If I send this text to mine, shawty, is you down to slide? Don't say not tonight, cause you be busy, tell another lie. I done seen this thousands of times, I retype like thousands of lines. We done did this thousands of times, so I ain't tryna choose another time. Shawty, tell me now if you be really tryna slide.
tired of this shit, yeah. Finna flood my wrist, yeah. I'm writing all these hits, but I wonder what I'm missing. I can never call you my little baby, no. When I drop, I wonder if you say my songs. Cause every time we fucking, we done came and went. But I'm the type to kill for my baby, yeah. I don't care about no fucking Rollie or Mercedes, yeah. Need somebody that really ride or dies with me, yeah. But I don't get in my feelings, I get in my bag. Shawty, if you love me, no, we can't go run it back. They ain't the first bitch to do the run around. I might debut first, I did how to sound. I got so much drink in me, wonder if you missing me. These days I can't fucking sleep, it's bad, I'm out here living dreams. If I send this text of mine, shawty, is you down to slide? Don't say not tonight, cause you be busy, tell another lie. I done seen this thousands of times, I retype like thousands of lines. We done did this thousands of times, so I ain't tryna choose another time. Shawty, tell me now if you be really tryna start. Said I'm tired of all the acting and the bullshit. Girl, hit me back or I'll be back with a new bitch. You know they trash, but you recycling the same dick. Girl, you stay shameless, bringing